high growth scenarios in 2020 to 2035. Historically, Indian growth accelerations have been accompanied by high growth domestic investment rate. बेटा ऐसा देखा गया है कि ऑफ कोर्स जब भी इंडिया ओवरऑल ग्रो करेगी तो इन्वेस्टमेंट भी हाई होगी, largely financed from increased domestic saving, और वो investment it will come from domestic saving, supplemented modestly by external savings including foreign direct investment. It's not that investment has to be always through domestic investment, savings. Even foreign savings can induce investment. But it has been seen that major component of increasing investment has been the domestic savings. A macroeconomic framework is needed to achieve the growth objective. Now, what he has stated that if we want to grow between 2020 to 35, तो हमें एक proper framework की जरूरत रहेगी. The gross fixed capital formation rate need to increase from 31% to around 33%, and ascending 35 to 38%. It is feasible since gross fixed capital formation was 33% in 2007 and 8. So what he is saying is, what Rakesh Mohan is saying is, कि अगर हम 2007-8 में 33% अचीव कर सकते थे, if it was possible for us to achieve 33% during 2007-8, so it is very much possible that we can achieve a similar investment in the coming years. And if we keep our target of 35 to 38% in this period, and then if we further 33 to 35% in this period, अगर हम अपना target 33 से 35% रखते हैं 2020-25 में, और 33 से 38% रखते हैं 2030-35 में, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं. और वो बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने पास्ट में इंडिया में होता हुआ देखा है. The corresponding rate of domestic savings would be about 31 to 33%. और अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए 33 से 35, तो उसके लिए सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग्स का इतना होना जरूरी है. और अगर हमें यहाँ पे 35 से 38% इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सेविंग्स को 33 से 36% होना जरूरी है. सो वो फिर से बोलते हैं कि हमने 2007 and 8 में वी हैव सीन की सेविंग्स 37% थी, तो व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली अचीवेबल इन द इकोनॉमी. These projections envisage an increase in the all three major component of saving: household, private and public. Now domestic savings बेटा कहाँ से आ सकती हैं? Household sector से, firms से and government sector से. So if we want to increase the domestic saving, he suggests that we should increase it for all three sectors. Overall efficiency of the economy. One crude measure of productivity is ICOR, incremental capital output ratio, जो मैंने पहले लेक्चर में बात की. Indian ICOR have ranged between 3.5 to 4.5% for last 3 decades, except for some outlier years. Better leave this table. Our projection embedded in the desired growth path imply ICOR of 4.2 over the projected period. तो ये कहते हैं कि अगर हम पिछले कुछ पीरियड की बात करें तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 3.5 से 4.5 के बीच में रहा है. और अभी भी अगर हमें इस ग्रोथ को अचीव करना है, अगर हमें एक अच्छा ग्रोथ रेट अचीव करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट ICOR रिमेन्स एट 4.2 in the coming period. Sectoral growth transformation. A key feature of such growth is that even with relatively optimistic agricultural sector of around 4%, overall GDP growth is in excess of 8% are really not possible to achieve without manufacturing sector growth approaching 10%. The revival of competitive Indian industry manufacturing sector over the period is this. ठीक है, आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो. ये बोलते हैं कि देखो हमें समझ में आ गई है, we understand that agricultural sector cannot grow beyond a certain range. हमने पास्ट में भी देखा that India has not had a very good experience with the agricultural sector, and if we assume that agricultural sector will grow at 4%,
अगर हमें लगता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर 4% पे ही ग्रो करेगा, तो अगर हमें अभी भी जीडीपी 8% से ऊपर चाहिए, इफ वी नीड जीडीपी टू ग्रो इन एक्सेस ऑफ 8%, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा और हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 10% से ऊपर ग्रो करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है तो हमें प्रॉपर उसको रिवाइव करना होगा, है ना, और यही हमारा की चैलेंज रहेगा। Household savings. There need to be focus on increasing savings as there have been dramatic fall in net household financial savings from the high of 11-12% of GDP to around 7% in the recent year. ये कह रहे हैं कि हमने इतना हैवी, तो यू रिमेम्बर दैट टेबल बेटा जो मैंने बताया था आपको कि डोमेस्टिक सेविंग में हाउस होल्ड सेविंग्स का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये बोल रहे हैं कि हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर ही जो है उनका सेविंग्स रेट रिसेंट ईयर में बहुत डिक्लाइन हो गया है। सेविंग्स कैन बी मोबिलाइज्ड by ensuring greater financial inclusion through existing measures such as Jan Dhan Yojana, introduction of new mobile related financial technology and payment system. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंक्लूजन लेके आना पड़ेगा। इंक्लूजन मीन्स एवरीवन शुड हैव अ बैंक अकाउंट, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन में, एवरीवन शुड हैव अ बैंक अकाउंट, एवरीवन शुड हैव फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस, तभी तो वो उस अकाउंट में जाके सेव कर पाएंगे, right? So we need to introduce new financial inclusion policies such as Jan Dhan Yojana, such as introduction of new mobile related financial technology and payment system. There needs to be an effort to ensure savings are channelized to productive use. और हमें देखना पड़ेगा कि ये सेविंग्स सही जगह पे जाएं, मतलब फर्म्स तक पहुंचे ताकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो पाए। All of this depends on maintenance of low inflation in the country on a sustained basis. और इन सब के साथ साथ सेविंग्स हाई कब होती हैं, जब इंटरेस्ट हाई होता है, रियल इंटरेस्ट रेट, और रियल इंटरेस्ट रेट व्हेन इट इज हाई जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होगा। सो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स द इन्फ्लेशन टू बी लो इन द इकोनॉमी so that savers receive adequate real interest rate, ताकि सेव जो भी पैसा बचा रहे हैं उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिले। Appropriate monetary policy aimed at the maintenance of low and stable inflation would be extremely helpful if supplemented by supply side policy at improving productivity and output in agriculture. अब हमने एक तो देख लिया कि हमें इन्फ्लेशन को कम करना है ताकि सेविंग्स बढ़ पाए, बट उसके साथ साथ हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, आउटपुट भी बढ़ाना है, ताकि जीडीपी पे वो कंट्रीब्यूट कर पाए, एंड एट द सेम टाइम ताकि फूड इन्फ्लेशन ना हो, फूड का प्रोडक्शन इनफ रहे। Food inflation containment will also depend on more focused rollout of rural infrastructure in terms of transport and energy, mainly public sector function. अब देखो, एक बार ही सपोज फूड प्रोड्यूस हो गया और फूड रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर तक आने के लिए बहुत हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, then food price will increase. So we want to ensure that food is reaching to the people at a relevant rate. Food is reaching to the public at a proper price, और उसको इंश्योर करने के लिए वी नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सेक्टर, और वो कौन प्रोवाइड कर सकता है बेटा, दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स, corporate savings and investment at current rate of 10 to 12% is essential for a sustained basis. हमें चाहिए कि कॉर्पोरेट सेविंग्स 10 to 12% पे रहें इस कमिंग पीरियड में भी। The reason why corporate saving doubled during golden era was due to profitability during the period. अब 2003 से 8 में क्यों कॉर्पोरेट सेविंग्स डबल हो गई, क्योंकि लोग प्रॉफिट कमा रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर पा रहे थे, they were able to have retained earnings. High corporate investment levels when enabled by availability of ample external and internal resources, particularly that of net household savings. तो अगर प्रॉपर सेविंग्स मिलती रहेंगी, इन्वेस्टमेंट हाई रहेगी, प्रॉफिट्स हाई रहेंगे, ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट सेविंग्स विल बी हाई. Fiscal consolidation and inflation management allowing sustained low nominal growth rate will have positive impact on corporate savings and investment. अब अगर इन्फ्लेशन लो रहेगी तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे, अगर ये लो रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट हाई रहेगी, प्रॉफिट हाई हो जाएंगे.
अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, क्राउडिंग आउट विल बी लो, इन्वेस्टमेंट विल बी हाई. When investment will be high through these reasons, तो automatically profit will be high. If profit will be high, तो automatically corporate savings will also be high. Corporate savings भी अपने आप high हो जाएंगी. Okay. Public sector savings. It involves government saving and public sector saving. Public sector में कौन सा आ जाता है? Public sector का अपना savings और government का saving. Government savings turned negative in the NAFC financial crisis and public sector savings remained positive. It is essential that great effort be expended in containing subsidies as opposed to current policies in different ways, both at center and state level. तो बोल रहे हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट का सेविंग्स बढ़ाना है तो गवर्नमेंट के खर्चे को कम करना होगा. We will have to reduce government expenditure to increase the savings of the government. And that can be possible if we reduce the subsidies that the government is currently giving. Accordingly, if government saving can be maintained at mildly positive level and public enterprise savings can be restored to 3 to 4%, overall public savings can be increased from 1.5 to 3% of GDP and to 3.5% in this period. तो वो कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट सेविंग्स को पॉजिटिव कर पाते हैं, अभी वो नेगेटिव है, अगर हमने गवर्नमेंट सेविंग्स को पॉजिटिव कर दिया प्लस जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनकी सेविंग अगर 3 to 4% पे ले आए हम, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल जो पब्लिक सेक्टर का सेविंग्स रहेगा वो अभी करेंटली 1.5% पे आता है, वो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू 3% 2020-25 में एंड टू 3.5% 2030-35 में. तो अभी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर का सेविंग्स नेगेटिव है, पब्लिक एंटरप्राइज का सेविंग्स पॉजिटिव है, बट ओवरऑल नेट 1.5% सेविंग्स रेट चल रहा है. वी हैव टू मेक दिस गवर्नमेंट सेक्टर सेविंग पॉजिटिव. इसको पॉजिटिव रखेंगे 3 to 4% पे, ताकि ओवरऑल हमारा यहाँ पे 3% to 3.5% रहे in the period of 2020-25 and further increase to 3.5% in the period of 2025 to 35. Rakesh Mohan, Professor Rakesh Mohan says that if we can increase the public sector saving, so it will be another source of savings. और अगर savings बढ़ेंगे तो investment will automatically increase. If investment will increase, GDP will increase. Some recent estimates suggest that current total public sector borrowing is almost 9% of GDP. This has already crowded out household financial savings and crowd out the private corporate savings, and corporate demand for investment gets rekindled. It accordingly contributes to prevalence of relatively high real interest rate in the economy and impedes monetary policy transmission if attempts are made to provide monetary stimulus. अब देखा गया है कि अभी पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर रहा है मार्केट से. अगर पब्लिक सेक्टर ज्यादा पैसा बोरो करेगा तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम बचेगा. प्राइवेट सेक्टर के लिए if there is less money left for the borrowings, then there will be high crowding out effect. If we want to lower the crowding out effect, हमें अगर इस crowding out effect को lower करना है, we want to ensure that the borrowing of the public sector is reduced. Thus, reduction in overall fiscal deficit and borrowing requirement of the government at center and state level, it is important for restoration of sustainable growth. So we want कि government का fiscal deficit कम हो जाए. We want to lower the fiscal deficit of the government and we want to lower the borrowings of the public sector. The private corporate sector would once again have better access to financial resources for high level of investment needed for high economic growth. अब जब तक savings private sector के पास नहीं जाएंगी, we will not have investment. If we don't have investment, we will not have economic growth. So we want to ensure that there is enough. We want to ensure that there are enough funds available to the private sector for the purpose of investment. It is possible, however, that great improvement can take place in overall public sector saving if tax GDP ratio can be improved. अब अगर हम tax GDP ratio को increase कर देते हैं बेटा, it means that revenue will be increased, government revenue. If government revenue will be increased, then fiscal deficit will fall, government borrowings will fall. If this will happen, then automatically investment will
increase. Overall, for projected increase in public investment to be feasible, enhancement in public saving through higher tax revenue is essential. Okay, we'll stop here.